Bismillahirrahmanirrahim. His Excellency Sahibzada Sultan Ahmad Ali, respected Dr. Moin Nizami Sahab, respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. Thank you for the Muslim Institute giving me the chance to speak on such a very important element of the enlightenment in the society, which is the socialization of the consciousness. This is the most ignorant factor in our society, that we must work on it. This is actually the socialization of the consciousness that connect us with ourselves, society, nature, and God. And if we see the saints, Sufis, masters, and scholars like Rumi, Sultan Bahoo Rahmatullah alayh, Ibn Arabi, Attar, how they have attained such an excellent level of the human self? How? Because they have worked on their consciousness. They have go through the process of deconstruction, purification, integration, and progression. And out of that superhuman consciousness, we have seen the fruits of wisdom, the unconditional love for humanity, and the true recognition of the God. But where are we standing at the moment? If we see our society, look at our social values, look at our attitudes, our behaviors, our religious extremism, and the heart-breaking social evils. Why? Kyun hai aisa? That's because we have lost the true essence of our consciousness. We have lost the process of socialization of the consciousness. और ये वो चीज़ थी जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया, डेप्यूटी ऑफ गॉड, अल्लाह का खलीफा. Without knowing who you really are, without going through the process of the deconstruction, the progression, the integration, we cannot reach there. We cannot claim that we are the deputy of God. We must go the process of socialization. So what is it? Socialization क्या है basically, और जो consciousness है वो क्या है? Is the awareness about your own self, your internal knowledge, your I-ness. And if you go deeper into this consciousness, there are the three levels. One is the ego consciousness, second is the soul consciousness, and the third is the spirit consciousness. What is the ego consciousness? क्या है ये? हमारी जो social construction है, socially constructed consciousness, जो हमारी society ने हमें सिखाया, जो हमारे culture ने हमें सिखाया, जो हमारी media ने, academia ने हमें सिखाया, और हम ये समझते हैं, this is what who we really are. हम ये हैं. This is our ego consciousness. और इसके भी दो parts हैं. One is a constructive, क्योंकि instant भी इसका part है, and other is a destructive. The second is the most beautiful, which is the actual essence of the consciousness, that's the soul consciousness, which is the heart intelligence, which are the godly attributes, which is our inner guiding system, our intuitions, our inspired knowledge. And third one is the most highest one, that is the spirit consciousness. Non-dual, transcendental level of the consciousness, the ultimate reality. And if we analyze the teachings of Sultan Bahoo, Rumi, and all the saints and the mystics and all the great scholars, the main emphasis in all the socialization of these level of the consciousness, their inner chemistry, how we can attain that level, how, what is the process, and what is the connection of this consciousness with ourselves, how this consciousness is connected with peace and enlightenment with the society, how through this consciousness we can recognize our Allah, we can recognize our relationship, a beautiful relationship with God. They have given the empirical evidences that if you ignore the consciousness, you can deplete yourself. You can have a shallow self, chaos in the society with no vision, no mission, no passion, no clarity, and no understanding of who you really are.
So we must go through the process of the socialization. The first important thing is the deconstruction. किस चीज़ की deconstruction? Your all false belief system, ideologies, perspective, your perceptions, which is not really you. You must deconstruct it first. क्योंकि आप जब तख्ती के ऊपर लिखते हैं तो पहले आपको मिटाना पड़ता है, तब आप जाके कई नई चीज़ लगते हैं. सो यू मस्ट गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डीकंस्ट्रक्शन. आप अपनी ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग करते हैं. जब तक आप डीकंस्ट्रक्ट नहीं करते, आप रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. रिकंस्ट्रक्शन के लिए आपकी डीकंस्ट्रक्शन जो है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह फरमाते हैं, नफ्स पलीत पलीती कीती बाहू, कोई असली ता पलीत ना से हूँ. So this is not an easy thing. How can we take it so for granted? How can we take it so for granted? It's an important factor आपका, and we never know what's going on within ourselves. And that's not an easy thing. It's not that कि आप बस कुछ दिन के लिए meditation किया. That's not a few hours or days. It is a lifelong commitment, a lifelong process. And we must own it. We must take the responsibility of every single thought and every single action. The second thing is purification. Your all satanic forces, your all the negativities, all the false, जो भी आपके energy system के अंदर है, the physical level, emotional level, mental level, spiritual level, you must purify it. And once you purify it, you know what happened? You open the door of the kingdom of your heart. जिसको सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह फरमाते हैं, दिलते दफ्तर वहदत वाला दाइम करे मुताला हु. This is the most important and this is the highest level of your consciousness. This is where you find who you really are. This is where you find what is the purpose of my being. Why am I here? Why God created me? And how I am connected with yourself. Remember, यहाँ पे वहदत की बात हो रही है. और क्वांटम फिजिक्स में जब आप जाते हैं, वहाँ कहते हैं डीपर सब एटॉमिक लेवल के ऊपर हमें जनरली सामने सेपरेशन नज़र आती है. डीपर लेवल के ऊपर देयर इज़ नो सेपरेशन. वी ऑल आर कनेक्टेड. आप इंडिविजुअल कुछ नहीं हैं, आप सोसाइटी के साथ हैं. आपके जो सोसाइटी में पड़े हुए हैं, सोसाइटी के साथ आप कनेक्ट होंगे, देन यू विल बी बिकम अ होल. देयर इज़ अ होलनेस, interconnectedness, there is a unity of the consciousness, and without that unity आप कभी मोहब्बत को, पीस को, अमन को, coexistence को फील नहीं कर सकते. You must open your heart, and you know science says आपका दिल का अपना एक दिमाग है, and it has a very strong electromagnetic field, and it can energetically affect yourself, आपके environment को, और एवरी सिंगल थिंग अराउंड यू. जो आपके हार्ट का लेवल है, दैट इज अफेक्टिंग यू एंड एवरी वन अराउंड यू. सो यू मस्ट टेक योर सेल्फ टू दैट लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस. अगर वो आप उस लेवल पे नहीं जाते हैं तो हम बड़ी सुपरफिशियल सी और बड़ी ऑर्डिनरी सी लाइफ गुजार रहे हैं. वी आर नॉट स्टैंडिंग देयर, वी आर नॉट गोइंग देयर. अच्छा, इस यूनिटी को, इस कोएग्जिस्टेंस को, मैं केस स्टडी मेरी अपनी ही है, वो मैं आपको सर के परमिशन से मैं बताऊंगी. एक पोएम है, उसमें इस कोएग्जिस्टेंस को बताया है कि हाउ व्हेन यू कनेक्ट विद योर द न्यूक्लियस ऑफ योर हार्ट, देयर आर नो टाइम एंड स्पेस. जोग्राफिकल बाउंड्रीज डिजॉल्व हो जाती हैं, एंड अल्टीमेटली यू कनेक्ट विद ऑल द बींग्स. मेरा ताल्लुक एक पहाड़ी इलाके से है, उगी से है, और सी a person who is living in that valley, how she's connected with Sultan Bahoo rahmatullah alayh, Rumi, Baghdad, how all these things happen. That's all because of the unity. So in this poem, सबसे पहले आपको होगी कि मैं सैर कराती हूँ, और then you will see the unity of the consciousness. उगी वादी रहमत वाली, सब्ज़ा ख़ास बहश्ती सब्ज़ा, छाँव जैसे माँ का साया, पानी जन्नत नहरों वाला, अच्छा साफ शफाफ और मीठा, मट्टी हिरन के नाफे जैसी, शजर उगे हैं एमन वाले, समर मनो सलवाहों जैसे हर चोटी निस्बत वाली, ओहद पहाड़ है मुर्शिद इनका, चिड़ियाँ शाम के सहरा से हैं, बुलबुल है शिराज से आई,
लोग प्रेम मोहब्बत वाले, लहजे ख़ास मुरव्वत वाले, माथे मक्का से हैं रोशन, सीने ख़ास मदीने वाले। इरम गिलानी को ही देखो, मट्टी यहीं पे मेरी गूंदी, आई पर बगदाद से थी ये। जंग है कोसों दूर यहाँ से, लेकिन बाहू मेरे अंदर। मैं भी बोलूं मस्त कलंदर, हक बाहू की हू है मुझ में, तू ही तू, बस तू है मुझ में। So this is the level, this is the paradigm shift. जब आप इस paradigm में shift करते हैं, unity में आते हैं, holistic model में आते हैं, interconnectedness में आते हैं, तो what happens? Separation transform into the interconnectedness, interdependence, low self-esteem transform into the self-confidence in the higher moral values, lacking transform into the gratitude and abundance, pain into suffering, fear transform into love, and darkness transform into light. Thank you all.